जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप लास्ट लेक्चर में आपको इवेपोरेशन, वाई इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग एंड इवेपोरेशन वर्सेस वेपराइजेशन पढ़ाया गया था। देन आई थिंक ऑल ऑफ यू आर सेटिस्फाइड विद दैट टॉपिक्स। आपको सब समझ में आ गया होगा और आपको आगे अब हम चलते हैं। ओके, व्हाट आर द अदर टॉपिक्स आर, then first we will discuss today other two states of matter. Okay, we have discussed that matter have three states. All of you know that solid, liquid and gas we have discussed in first lecture. So there are two more states of matter. First is plasma and second is Bose-Einstein condensate. So they are other than those three states, solid, liquid. If anyone will ask you that states of matter, then you will say that three, solid, liquid and gas are important, and after that there are two more states, that plasma and Bose-Einstein condensate. Okay, then what is plasma? It is defined here. It is a hot ionized gas. Generally, what is plasma? It is hot ionized gas consisting of equal number of positively charged ion and negatively charged electrons. Means there are equal positive charge and negative charge. Negatively charged electron and positively charged ions, they will get neutralized. So it is a hot ionized gas which consists equal number of positive and negative charged ions and electrons. And what are the examples? So you have to remember these only. Okay, definition and examples. It is not discussed in details as compared to solid, liquid and gas. So you have to remember example, that is lightning. Lightning जो बिजली कड़कती है उसे कहते हैं lightning. ठीक है, lightning and stars. Stars are also example of that, they are in plasma state. Okay, next is Bose-Einstein condensate. Definition: it is a state of matter in which separate atom or subatomic particles cool to temperature. Subatomic particles क्या होते हैं जानते हैं आप? एटम क्या होता है? What is atom? एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं. Okay, so atom can be divided in electron, proton and neutron. So these are subatomic particles. So it is a state of matter in which separate atom or subatomic particles cool to temperature very near to absolute zero. What is absolute zero temperature? It is written here 0 Kelvin, or it is minus 273 degree Celsius. Minus 273 degree Celsius or 0 Kelvin means up to that temperature they will be cooled. At that temperature it is very near to absolute zero. So definition you have to remember, and you have to write example also. Then there are example neutron star and liquid helium. Okay, liquid helium means, generally you know that helium is gas. It is occurs in gaseous state, but if we want to converted it into in liquid form, then we have to cool it at approx 273 Celsius, minus 273 degree Celsius. Okay, next one is temperature units. All of us know about the Celsius, Fahrenheit and Kelvin. These are the temperature unit. First is Celsius, second Fahrenheit and third is Kelvin. So how we will convert it into each other? एक दूसरे में इन्हें अगर कन्वर्ट करना है, अगर आपको टेम्परेचर रिटर्न है सेल्सियस में एंड यू वांट it in Kelvin, then how you will convert? Then there are formula for all conversion, that Celsius to Fahrenheit formula is C is equal to, you have to remember this formula, it is important formula, so all of you have to write it and learn it. C is equal to 5 by 9 multiplied by F minus 32. Okay, you can write this formula in that way also. C by 5 is equal to, okay, C by 5 is equal to F minus 32
by 9. In that way also you can write. So if it 1 is given, means Celsius is given, then you can calculate it in Fahrenheit. So one example is there, that 40 degrees Celsius is there, we have to convert it into Fahrenheit. So Celsius is given that 40, so 40, okay, Celsius is 40, it is multiplied by 9, so 40 into 9 is equal to 5 will be multiplied to F minus 32. So here I have written that 5F minus 5 into 32, it is 160. Okay, 5F minus 160. So 5F is equal to, then 160 will be shifted in that side, and already you have to multiply 9 into 40, then it is 360, and 160 is in minus form and it will shift towards it, so it will convert it into plus. So 360 plus 160, that is 520. So F is equal to 520 divided by 5, so it will be 104. That is in Fahrenheit. 104 is in Fahrenheit. Okay, so in that way you can change any temperature. Okay, any value is given for Celsius or it is given in Fahrenheit. Okay, you can convert any one, Celsius to Fahrenheit or Fahrenheit to Celsius also. Now next is Kelvin to Celsius or Celsius to Kelvin. For means one formula can be used for any conversion in Celsius to Kelvin or Kelvin to Celsius. यहाँ पर कोई भी यूज कर सकते हैं. So this formula is K is equal to C plus 273.15. Sometimes it is written 0.15 and sometimes it is not written. Okay, it can be equal to 273 also. सो डोंट गेट कन्फ्यूज कि ये क्यों लिखा है सर ने, या बुक में आपको दोनों मिल सकता है, कभी 273 होगा, कभी 273.15. सो इट इज़ ओके, इट इज़ समवट इक्वल. ओके, approx. So we will start. That example is that Celsius is 27. Suppose 27 degrees Celsius temperature hai, then in Kelvin we have to convert it in Kelvin. So by formula easily we can write 273.15 plus Celsius. Celsius is given that 27, so we will add these two value, it will be in Kelvin. So in Kelvin it is 300.15. Okay, if 0.15 is not given, then it will be 300 Kelvin. 27 degrees Celsius is 300 Kelvin. Okay, so in that way you can change any one to any Celsius to Fahrenheit, Fahrenheit to Kelvin also. If it is given that Fahrenheit to Kelvin, then what you will do, first you will convert Fahrenheit to Celsius, okay, then Celsius to Kelvin. And if it is given in Kelvin and you have to convert it into Fahrenheit, then first you will convert it into Celsius, then Celsius to Fahrenheit. Okay, in that way you can convert any temperature in any temperature units. Okay, thank you. So we will continue that question answer. Okay, some reasoning question are there. Why do we keep ether and acetone at cool place? Okay, now remember that in last lecture I have discussed that acetone, spirit or petrol, if you will touch at your skin surface then you will feel cool. आपको कैसा महसूस होता है, ठंडा फील होता है. रीज़न क्या था, that it is easily get converted into vapor form, from liquid to vapor form at normal temperature, means at room temperature also they can get converted from liquid to gaseous state. So these liquids are easily evaporated at room temperature and they are inflammable. what is the meaning of inflammable? means जिसको जलाया जा सके, जो आसानी से जलाया जा सकता है. So spirit, petrol and acetone, all the liquids are volatile liquids. I have said in earlier class, पहले ही बताया था मैंने आपको previous lecture. So
इनफ्लेमेबल का मतलब जो जल जाता है आसानी से, जिसको हम जला सकते हैं. इट कैन बी यूज्ड एज फ्यूल ऑल्सो. सो इट कैन कैचेज फायर एट रूम टेम्परेचर. अब देखिए ये रूम टेम्परेचर पे भी इसमें आग लग सकती है, क्योंकि ये बहुत फास्ट इवेपरेट हो रहे हैं. ये इन्हें हम जला सकते हैं. जैसे कि आप पेट्रोल में जानते हैं कि वो पेट्रोल का वेट क्या होता है, हल्का होता है, वो आसानी से इवेपरेट हो जाता है. और इट कैन कैचेज फायर ऑल्सो. ओके. सो इनको हम, क्वेश्चन क्या था, दैट व्हाई डू वी कीप ईथर एट कूल टेम्परेचर, मीन्स रूम टेम्परेचर पे भी अगर इसमें आग लग सकती है, सो हमें इसको क्या करना चाहिए, रूम टेम्परेचर से भी लो टेम्परेचर पर रखना चाहिए. सो ऐसे रूम में रखें या फ्रिज में रखते हैं. ओके. जहाँ ऐसे रूम जहाँ एसी चल रहा हो, जहाँ पे टेम्परेचर डाउन रहता हो नॉर्मल रूम टेम्परेचर से. ओके. या फिर हम फ्रिज में भी ऐसी चीज़ों को रखते हैं, ऐसे केमिकल्स को. Okay, next question. Why do we see water droplet on the outer surface of a glass containing ice cold water? क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? क्या कहा गया है कि अगर कोई ग्लास है जिसमें आप आइस कोल्ड यानी बहुत ठंडा पानी रखते हैं, तो उसकी ग्लास की आउटर सरफेस पे, बाहर बाहर की तरफ सरफेस पे, उसमें छोटे छोटी वाटर वाटर के ड्रॉप्स आ जाती हैं, पानी की बूंदें आ जाती हैं. देखा होगा आपने कि ठंडा पानी अगर आप टेबल पे रखते हैं तो टेबल पे ग्लास जहाँ रखा हुआ है उस सरफेस पे थोड़ा वाटर भी कभी कभी कुछ देर के लिए रखा है तो वहाँ पे वाटर जमा हो जाता है. वो वाटर कहाँ से आता है, ग्लास का ही वाटर आ जाता है क्या बाहर? नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट इन मेटल और ग्लास कंटेनर से वाटर अपने आप तो बाहर नहीं आ रहा है. देन व्हाट हैपन्स, वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर. ऑल ऑफ अस नो कि एटमॉस्फेरिक गैसेस में वाटर कंटेंट भी प्रेजेंट होता है. ओके. हमेशा आपको याद रखना है दैट इन एटमॉस्फेरिक गैसेस नॉर्मल टेम्परेचर पे भी एयर में वाटर कंटेंट प्रेजेंट होता है. सो वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर कोलाइड टू द सरफेस ऑफ कंटेनर. कोलाइड का मतलब होता है टकराना. स्ट्राइक कर भी, स्ट्राइक वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ, या कोलाइड यानी वो टकराते हैं. जब गैसियस पार्टिकल की बात होती है तो हम पढ़ चुके हैं कि गैसियस पार्टिकल हमेशा इधर उधर मूव करते रहते हैं. और जब ग्लास रखा जाएगा ठंडे पानी का, तो उसके सराउंडिंग के जो वाटर ड्रॉपलेट जो मूव कर रहे थे इजली फ्रीली गैसियस फॉर्म में, वो जब उस सरफेस पे कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, देन इट लूजेज इट्स एनर्जी एंड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. यानी वो वेपर से यानी गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. और गैस से लिक्विड फॉर्म में जब कन्वर्ट होंगे तो उनकी एनर्जी डाउन होगी. सो इट इज़ रिटन दैट लूजेज एनर्जी एंड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं. और वहीं जहाँ वो कोलाइड करते हैं वहीं पे वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होके उसी सरफेस से वहीं पे लिक्विड फॉर्म में अपीयर हो जाते हैं. स्टेट एंड अपीयर्स एज वाटर ड्रॉप. लिक्विड बनने के बाद वो वाटर ड्रॉप के फॉर्म में वहीं पे उस से स्टिक रहते हैं. या फिर बहुत ज़्यादा ड्रॉप्स जब बनने लगती हैं तो वो एक बल्क फॉर्म में आके वो फ्लो करने लगता है वाटर. ओके. ऑल ऑफ यू हैव टू learn these points. You have to write in your copy, and you have any confusion, you can ask. Okay. Thank you. We will continue another topics in next lecture. Thank you.